Very pleasant morning to one and all. I hope that I am being audible. We hope you all are well and safe. It gives me utmost pleasure to welcome you all to the colloquium on right of identity of LGBTQ and gender fluidity. This colloquium has been organized by the RGNUL Pro Bono Club in association with the Department of Justice, with the objective to acquaint us with the position of LGBTQ community today and the atrocities faced by them. With this colloquium, we aim at creating a more inclusive and safe society for the LGBTQ community while ensuring that their right of identity is not violated under any circumstances. I, Chavi Singla, and Sunidhi Kashyap will be moderating this colloquium. This colloquium is extremely special to us at the RG Annual Pro Bono Club as it is the first ever event being organized by the club. The Pro Bono Club scheme has been conceptualized to strengthen the existing pro bono program by integrating law schools and students within its fold with the primary objective of improving the efficiency and quality of pro bono legal services by providing assistance to pro bono advocates through competent law students. We at Rajiv Gandhi National University of Law would like to take this beacon further and be a part of such initiatives and innovations. The RGNUL Pro Bono Club, which aims to instill in the young student's mind a responsibility towards the community so that they continue to offer pro bono services for the unassisted and disadvantaged people of society, will be inaugurated in the gracious presence of our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. B.S. Bajpai, and our worthy Registrar, Professor Dr. Anand Pawar. With this, I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. B.S. Bajpai, to kindly deliver the welcome address. Thank you very much. Good morning, all. And I take this opportunity to congratulate RG Annual Pro Bono Club for organizing this colloquium on right of identity of LGBTQ and gender fluidity. I'm sure that this is going to be a very important discussion in view of the fact that we already have a legal regime now come up that in terms of a proper law that we have, the Transgender Person Protection of Right Act 2019. And it is a curious question, therefore, for all of us to know as to whether the situation in the ground has changed for these people or not. That is number one. Number two, we also have had two very landmark Supreme Court decisions with regard to these people. And therefore, in these both the judgments, especially Nal's judgment and the Navtej judgment, the gender identity questions have been properly addressed, and the Supreme Court has actually endorsed the gender identity for LGBTQ community. However, as I mentioned, that I always feel that while these normative arrangements are made in terms of law and legal regime, it is very important to understand the situation in the ground. And therefore, it is very important to examine the extent to which the mandate of these decisions as well as this law has reached the targeted beneficiary or not. So to my mind, I think there is a need to really undertake a proper exercise to actually see whether these persons continue to live in the same under the same problematic situation which they had. Because as we move that, we find that there are lots of issues and major problems faced by TG people. So that includes, marginalization and social exclusion, harassment, or poor economic condition, problem of homelessness, and the problem of transphobia and psychological distress. So all these things are very, very crucial. And there is a lot to actually look at and to undertake a proper action plan. So what I'm trying to convey, whether these state policies have now been properly geared or not to ameliorate or to mitigate the problems of these people or not. These questions are very, very crucial question for which we need a very empirical and crucial and critical insights.
I'm sure the panel of speakers present here would address some of these questions critically and probably come out with some suggestions which we can examine in terms of our research or in terms of our engagement with these people and the community action, including the legal aid initiatives, because I am always very curious to understand the university based legal aid initiatives, how they can actually mobilize the support and necessary guidance to these vulnerable sections in terms of empowering them and strengthening their position in the society, within the community at large. So I congratulate once again the faculty advisor, Dr. Avinandan, and her group. And this pro bono is a very unique idea which we have conceptualized and contemplated under the aegis of the Ministry of Law and Justice. And I'm sure such initiatives will go a very long way in setting up a very equitable society, a just society, and a very inclusive society. So my best wishes to all of you, and I'm curious to hear the panelists on this subject. Thank you, one and all. And to begin with, firstly, I'd like to tell all the participants that they can drop in their queries, if any, that will be taken up in the end. And to begin with the colloquium, I'd like to introduce our first speaker, that is Ms. Dhananjay Chauhan. It is an absolute delight for me to introduce Ms. Dhananjay Chauhan, who has fought day and night for years to support the transgender community. Ms. Chauhan went through a lot of adversities that could break a human down, but she had the spirit that rose higher than the ones oppressing it. She has fought with great determination and strength and continues to fight not only for herself but for the whole community. She has contributed heavily to the NALSA judgment, and which recognizes the identity of each and every person belonging to the transgender community. Being the first transgender student of Punjab University, she has reshaped the education system by winning the battle of admittance of people of trans community in the university. She has made education free for people for the transgender community in many universities. This has helped many people, and she is truly a role model for many people. Now I'd like to yield the floor to her. Uh, Thank you so much. Thank you so nice of you for introducing me here. Can you hear me? Okay. So सबसे पहले I would like to speak in Hindi. So I hope you are all comfortable with Hindi because जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो तो अपनी जर्नी को अपने स्ट्रगल को वो हिंदी से बढ़िया अपनी मातृभाषा से ज़्यादा कुछ भी बढ़िया नहीं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर GS वाजपेयी वाइस चांसलर of Rajiv Gandhi National University of Law and the faculty members and students सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर ये सेमिनार या टॉक या ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और खास करके इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है और साथ में LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में भी इसमें बात हो रही है। तो मतलब जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी दोनों के बारे में इसमें बात हो रही है, तो बहुत ये अच्छी बात है। हाँ, सबके बारे में बात होनी चाहिए। मैं शुरू करूं कि अपने जो जो ट्रांसजेंडर जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे आइडेंटिटी, बहुत सारे लोग उसके अंदर आते हैं। ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, इंटरसेक्स, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड लोग, और इसमें हिजड़ा कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। बट हिजड़ा जो है वो एक कल्चर है। सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। जो ट्रांस वुमेन
हिजड़ा कल्चर में एंटर करती है वो हिजड़ा कहलाती हैं, वो हिजड़ा हो जाती है। और हिजड़ा जो शब्द है वो हिजर से बना है। हिजर का मतलब होता है सेपरेट होना, अबेंडन, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना, सेपरेट होना। तो ये अरब से भारत में आया और ये शब्द हम लोगों से जुड़ गया मुगल काल के दौरान। उसी तरह किन्नर शब्द संस्कृत का शब्द है कि की और नर दोनों अलग अलग शब्द को अलग करें तो नर के साथ अगर की लग जाए तो किंतु, परंतु या अलग या डिफरेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस उसमें साथ में अलग तरह का नर या जिसके आगे किंतु लगा है, किम नरः, ये संस्कृत शब्द है। और ख्वाजा सरा का ही शॉर्ट जो है वो ख्वाजा का ख और सरा का शॉर्ट करें तो सरा या खोजा बोलते हैं। ख्वाजा सरा पाकिस्तान के पंजाब में बोला जाता है और खुसरा या खोजा इंडिया के पंजाब में बोला जाता है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ट्रांसजेंडर को पुकारा जाता है, खास करके ट्रांस वुमेन को। ये बड़ा एम्ब्रेला है। इसमें जो जब ये नालसा जजमेंट आई तो ट्रांसजेंडर स्लैश हिजड़ा मतलब दोनों को एड्रेस किया गया था। तो ये जो जर्नी है हमारी ट्रांसजेंडर की, वो बहुत ही मतलब इसमें काफ़ी स्ट्रगल है, बहुत सारा अपने आप से लड़ना, फिर समाज से लड़ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है समाज द्वारा। हम लोग तो बिल्कुल सही जेंडर में पैदा होते हैं, लेकिन समाज में एक विकृति है। आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समाज के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। समाज में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम थी, समाज में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, फैमिली में प्रॉब्लम थी, बाहर निकलते दरवाजे उसके बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बचपन में हम लोग जब पैदा होते हैं तो शरीर लेकर पैदा होते हैं, कोई जेंडर लेकर पैदा नहीं होता है। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। हम सिर्फ शरीर लेकर पैदा होते हैं। सेक्स जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, हमारा सेक्स डिटरमिन होता है, जो हमारे सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें सेक्स लिखा जाता है। बॉडी हमारी इस तरह की है। और जेंडर जो है, जब बच्चा बाहर इस दुनिया में आता है तो उसको उसकी कंसेंट तो नहीं होती है उसका जेंडर डिसाइड करने में। वो सिर्फ समाज द्वारा उसको निर्धारित कर दिया जाता है उसका अंडरवियर में देख के कि ये लड़का है लड़की है। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि जेंडर जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी है, खुद की पहचान है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को जिस रूप में देखता है, जिस भाव में, जिस भाव फीलिंग से वो आगे बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जेंडर डिसाइड कर लेता है। ये वैसे माना जाता है कि जब हम ता और ती बोलना सीखते हैं तो हम अपने आप को उस धीरे धीरे उस जेंडर में अपने उसी जेंडर में चले जाते हैं। जब हम ती बोलते हैं तो हम अपने आप को फीमेल अपने मानना शुरू, अगर ता है तो वो ता की तरफ बोलते हैं, लेकिन हमारे को करेक्ट किया जाता है फैमिली द्वारा। अगर मैं बॉय के शरीर में पैदा हुई और मैं ती बोल रही तो घर वाले तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्शन करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। ये करेक्शन बिहेवियर में हो सकता है, लेकिन हमारे जो हमारा अंदर जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा मानव विकास का जो क्रम है, जिसमें जो बदलाव आते हैं उसमें कोई इंसान बाहरी रूप से बदलाव नहीं आता है। ठीक है। जो नेचर ने और नर्चर में, आप जानते हैं कि नर्चर हमारा बाहरी आवरण, जो बाहरी जो माहौल है उसको हम उससे हम प्रभावित होके कुछ हो सकता है हम साड़ी पहनना, कपड़े पहनना, मेकअप करना, ये बाहरी रूप से सीखते हैं, लेकिन अंदर से जो हम फील करते हैं, भाव जो हमारे आते हैं, वो नेचर द्वारा ही दी जाता है। तो 5 साल की एज तक आते आते मैंने तो खुद अपने आप को फीमेल माना और आगे फिर उसी तरह अपने आप को मानती रही। इसमें भारत में ही नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया में कन्वर्जन थेरेपी भी होती है। बच्चों को जब कई माँ बाप को लगता है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका हम लोग मेल जो ये अपने आप को फीमेल मान रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं। तो मेरा 7 साल की उम्र में कन्वर्जन थेरेपी के लिए मुझे लेके गए ओझा के पास। तो ओझा ने कहा वो तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, कोई प्रेत आत्मा है फीमेल,
जिसकी आत्मा है इसके अंदर आ गई, तो इसको हमें झाड़ फूक करना पड़ेगा। वो तांत्रिक ने अपना झाड़ फूक किया, मंत्र शुरू किए रात के करीब 11-12 बजे, और मुझे कहा गया कि तुम इस बच्चे को छोड़ के चले जाओ। अ, अ, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं, कोई छोड़ने वाले छुड़ाने वाली कोई चीज थी नहीं। उस तांत्रिक को क्या पता कि साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, और हमारी नेचर किस तरह से हमें शरीर को बनाती है। तो जब ये सब चीजें नहीं, तो उसने चिमटा टाइप करके मेरे शरीर को दागना शुरू किया। तो ये उस समय हुआ, और मैंने डर के मारे पे कहा कि ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैं अपने आप को लड़का मानना शुरू कर दिया था उसके बाद। लेकिन ये डर था। इस तरह की जो कन्वर्जन थेरेपी है पूरी दुनिया में होता है। शॉक थेरेपी होती है, जो बहुत झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास पेरेंट्स लेके जाते हैं। एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे यहाँ पर, चंडीगढ़ के पास में ही बरवाला है, वहां से आए थे। तो अ, अ, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक करवा दो, ये लड़की अपने आप को मानता है। तो मेरे कहने से तो वो मानेंगे नहीं। मैंने उनको पीजीआई चंडीगढ़ में साइकाट्री डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट लेके उनको वहां पर लेके गई। तो वहाँ पर डॉक्टर बसु थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उनके पास हम अपॉइंटमेंट लेके गए, तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, अपने आप को लड़की मानते हैं। तो डॉक्टर हंसने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक तो आपको होना है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको जो नेचर करवा रहा है वो वैसे ही अपने आप को बढ़ रहा है। तो इसको काट छाट करने की जरूरत नहीं। पेड़ को हम लोग काटते छाटते हैं, उसको बड़े होने से रोकते हैं, उसकी शाखाएं काटते हैं, तो वो अननेचुरल है। पेड़ को जैसा बढ़ना वो बढ़ता रहेगा, चाहे टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सीधा हो, अपने आप ही बढ़ेगा। जहां उसको रास्ता मिलेगा वो अपने आप चले जाएगा पेड़ पर। जहां पर उसको रुकावट होगी तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। तो ऐसे ही हम बच्चे भी हैं, जो उसको जहां पर जैसा बढ़ना है, तो डॉक्टर ने कहा इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठीक तो आपको होना, आपकी काउंसलिंग होगी। तो उन्होंने काउंसलर को बुलाया और पेरेंट्स को भेज दिया उनके साथ कि इनकी काउंसलिंग करो, कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसको नेचर ने जैसा बनाया है वो वैसा ही बढ़ रहा है। तो ये एक हमारा स्ट्रगल का मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो हमें फेस करना पड़ता है, मार पिटाई, शॉक थेरेपी हो गया, कन्वर्जन, लेस्बियन के साथ करेक्शन करेक्शन रेप होते हैं, उसमें उनको ठीक करने के लिए कि इनका लड़कियों की तरफ रुझान है, या इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन लड़कियों की तरफ है, तो इनको लड़कों की तरफ करने के लिए इनके साथ रेप करेक्शन रेप किया जाता है। उसके बाद ऐसे गे लोगों के साथ भी सेम ऐसे ही होता है। सो उनको लड़कियों के साथ रहने दिया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई चीज सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी कभी किसी के कहने से चेंज नहीं होती है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा वहम है कि चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने तो भ्रूण हत्या भी की है, हम लोगों ने लड़कियों को कोख में मारा है, हमने सोचा लड़कियां पैदा नहीं होंगी, तो ये क्राइम है। अब तो इसको हम लोग कर नहीं सकते। इसी तरह हम ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, या LGBTIQ प्लस कम्युनिटी को कोख में तो ढूंढ नहीं सकते हम। अ, किसी ने एक ऐसा बहुत उच्च अधिकारी सेना में थे, उन्होंने कहा था कि गे को जो होमोसेक्सुअल लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। मैं हंसने लगी। मैं कहा, आप कैसे पहचानोगे कि होमोसेक्सुअल कौन है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे पहचान सकते हैं इंसान? तो ये तो इंसान के दिमाग में है। जेंडर इज नॉट नॉट इन बिटवीन टू लेग्स, जेंडर इन बिटवीन टू ईयर्स। हमारे कानों के बीच में, ब्रेन में है हमारा साइकोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल सेक्स। जब मिसमैच हो जाते हैं तब हम अपने को उसका उलट मानते हैं। जैसे हम जिस शरीर में पैदा हुए उसके उलट अपने आप को मानना शुरू करो। ये प्रकृति की एक अलौकिक घटना है। इसको इंसान को समझना कि बहुत परे, बस हमें एक्सेप्ट करना है। इंसान इसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए बड़े बड़े, चाहे पुराण है, उपनिषद हो, चाहे वो वेदास हैं, सब जगह एक्सेप्टेंस की बात ही लिखी थी। वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में, विकृतिम एवं प्रकृतिम। जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। हमें ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। व्हाट सीम्स अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल। तो वेद में तृतीय प्रकृति का वर्णन है कि दो प्रकृति, नर और नारी के अलावा और भी प्रकृति के लोग होते हैं, और उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन इस समाज में जितना मर्द और औरत का है, और उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे ही पुराणों में भी आप
इतना पुराण उपनिषदों में इतना अच्छा वर्णन है कि उनके बिना तो, जो तृतीय प्रकृति के बिना तो भगवान शिव भी नहीं कहीं जाते थे। उनके उनके सामने किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग बैठते थे। उसके बाद लोग नर और नारी का स्थान था। सबसे पहले देवताओं में किन्नर, गंधर्व और यक्ष की बारी आती थी, और यक्ष लोग होमोसेक्सुअल होते थे। किन्नर ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन लोग होते थे। तो यक्ष लोग कुबेर भी यक्ष थे और धन के मालिक थे। वो धन की रक्षा करते थे। तो इतना बड़ा हिस्ट्री रही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे बारे में इतना सारा कुछ लिखा गया। भगवान ने 24 के 24 अवतारों में सबसे ज्यादा अवतार जो है वो ट्रांजिशन वाले हैं। आधा वो शेर थे, आधा वो पुरुष थे, आधा मत्स्य अवतार में, इसी तरह सिंह वराह अवतार में। जितने भी ट्रांजिशन वाले रहे हैं उनमें आप देखिए कि ट्रांजिशन की इतनी बड़ी महत्वता रही है, ट्रांजिशन का इतना इंपॉर्टेंस रहा है कि जो कोई ट्रांजिट करता है अपने बॉडी को एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो उसका बहुत बड़ा वो देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी बुक में लिखा है गोदान में कि जब कोई इंसान नर और नारी के भेद से ऊपर उठ जाता है तो वो महात्मा हो जाता है। वो उस भाव से ऊपर उठ जाता है कि जो हमारी दुनिया में नर और नारी का भेद है उससे ऊपर उठ जाता है। सो हम उन चीजों से बाहर लोगों को निकालना चाहते हैं जो स्टीरियोटाइप है। जो लोगों ने परंपरागत हमारे बारे में सोचा है। 18वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी तक आते आते हम लोग फैमिलीज में थे। हम लोग हरम के रक्षक थे मुगल काल में। हम लोगों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया, हम लोगों ने सूफीज्म शुरू किया, हम लोगों ने देवदासी प्रथा को शुरू किया। लेकिन उससे उससे हमें बाहर कर दिया गया। जिन चीजों में हमने शुरू किया, साम वेद को पढ़ने वाले हम लोग थे, गाने वाले हम लोग थे, नृत्य करने वाले हम लोग थे। और जैसे भक्ति आंदोलन में भगवत गीता में लिखा है कि केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति स्त्री है। उसी भाव से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और वृंदावन में सभी लोग भक्ति भाव में, एक सखी भाव में रहते थे, अपने आप को औरत मानते थे। वल्लभाचार्य जी एक बार श्रृंगार कर रहे थे, औरत का भेष बना रहे थे, औरत बन मतलब मेकअप कर रहे थे। तो चित्तौड़गढ़ से मीरा जी जब वृंदावन आई तो उन्होंने उनके चेलों से कहा कि मुझे वल्लभाचार्य गोस्वामी जी से मिलना है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो महिलाओं से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने मीरा जी ने जवाब भेजा कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया? वृंदावन में तो कोई पुरुष नहीं है, यहाँ तो सभी सखियां हैं। भगवान कृष्ण ही से केवल पुरुष है। तो ये जो भाव है इस भक्ति आंदोलन में, वहां पर सखी संप्रदाय भी है वृंदावन में जो औरत बन के रहते हैं। और इसी तरह सूफीज्म में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नी में रुसिया यार मनाना, पावे मैनू कंजरी पढ़ना पवे। तब घुंघरू बांध के वो शाह इनायत के दरवाजे के आगे नाचते थे खूब, लड़की बन के। ऐसे ही अमीर खुसरो साहब भी निजामुद्दीन के लिए औरत बन के वो कवालियां लिखते थे, कव्वाल लिखते थे, गाना गाते थे। ये बहुत अच्छा सुंदर वर्णन रहा है। तो ये जो चीजें हैं हर जगह, चाहे वो हरम और मुगल का अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो, मलिक काफूर, या और भी खुसरो खान हो, मतलब स्लेव डायनेस्टी में हो या मुगल काल में, हर जगह ट्रांसजेंडर की बहुत बड़ी महत्वता रही है। 1857 तक आते आते जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो फिर हमारे राइट्स खत्म कर दिए गए। 1860 में होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया। हालांकि इसकी सजा पहले भी इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में इसकी सजा मृत्यु दंड था। पहले होमोसेक्सुअलिटी जो होमोसेक्सुअल पकड़े जाते थे उनको फांसी की सजा होती थी। लेकिन 1860 में ये सजा कम करके उम्र कैद में 10 साल से उम्र कैद की सजा में तब्दील हो गई, क्योंकि 12वीं शताब्दी में 2 लेस्बियन पकड़ी गई थी इंग्लैंड में, उनको फांसी हो गई थी। और इंग्लैंड में ये बहुत बड़ा मामला गरमाया था। और संसद में 2 सांसद आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी इंग्लैंड में कहाँ से आ गई है? तो दूसरा सांसद कहता है कि ये मैंने तो सुना ये भारत में होता है। तो ये सोचिए, आज हम लोग बोल रहे हैं कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट है और 12वीं शताब्दी में बोला जाता था ये इंडियन कंसेप्ट है। तो इतना बड़ा और इतना फांसी की सजा थी और 1860 में घटा के उम्र कैद होगी। उसके बाद 1871 में आप तो सब लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो 1871 में एंटी ट्राइबल एक्ट बना था जिसमें सभी
ट्राइबल्स को क्रिमिनलाइज कर दिया, उनको अपराधी श्रेणी में डाल दिया गया था। उसमें ट्रांसजेंडर को भी डाला था। उसमें उस समय जो शब्द यूज करते यूनिक यूज करते थे, बाद में इसको हटा दिया गया, फिर अब ट्रांसजेंडर बोला जाता है। तो उस समय ट्रांसजेंडर को पकड़ पकड़ के जेलों में भरा गया, उनको नंगा करके किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। इस तरह से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, खास करके ट्रांस वुमेन, वो छुप गई और उन लोगों ने अपनी विजिबिलिटी को जीरो कर दिया। वो छुप छुप के भीख मांगते थे, छुप छुप के सेक्स वर्क करते थे, और ये धीरे धीरे परंपराएं और मतलब एक डार्क में चलेगी, एक अंधकार में चलेगी। कोई किसी को बारे में जानना मतलब अपने बारे में नहीं बताता था कि वो ट्रांसजेंडर हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताते थे, अपने कल्चर को धीरे धीरे, जो मुगल टाइम में कल्चर डेवलप हुआ, हिजड़ा कल्चर, उसको क्लोज कर दिया गया, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, अपने आप को छुपा के रखते थे, अपने कल्चर के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, अपना ट्रांजिशन डिस्कस नहीं करते थे कैसे। और ये लगातार अभी भी आप हिजड़ा कल्चर डेरे में जाओगे तो कोई भी अपने बारे में नहीं बताएगा आपको कि हमने ट्रांजिशन कैसे किया, क्या हम लोग कौन थे। ये पुरानी परंपरा ऐसे ही चली है और 1871 के बाद बिल्कुल बंद हो गया। 1952 में इसको डीनोटिफाइड किया गया इस एक्ट को, और सारे ट्राइबल्स को मुक्त कर दिया गया इससे, उस ट्राइबल एक्ट से। सभी को, कुछ लोगों को जो घुमंतरू अर्ध घुमंतरू जातियां थी, उनको कुछ को एससी में, कुछ को एसटी में डाल दिया गया, लेकिन ट्रांसजेंडर को कोई राइट्स नहीं मिला, ट्रांसजेंडर को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। तो ये लगातार चलता रहा और ये बधाई परंपरा धीरे 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 आगे चलती रही। उसमें से बहुत सारे ट्रांस वुमेन लोग बाहर निकले, पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे थे वो धीरे धीरे अपने बारे में सोचने लगे, थैंक्स HIV एड्स प्रोग्राम्स, जिन्होंने जब ये HIV एड्स प्रोग्राम आया तो कम्युनिटी को काफी हाईलाइट किया गया, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग हुई। HIV एड्स उसमें उनको सिखाया गया कि किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो गई, धीरे धीरे काफी सारे पढ़े लिखे बाहर आए, सब लोगों ने मिलके एक बार 2012 में, जिसमें चंडीगढ़ से मैं भी रिप्रेजेंट किया था, हम लोगों ने नालसा के साथ मिलके एक कंसल्टेंसी दी मेरिडियन होटल में 2012 में हुआ था, जिसमें सभी जो पढ़े लिखे ट्रांस वुमेन, उसमें ट्रांस मैन भी कुछ लोग थे, वो दिल्ली में एकत्रित हुए, जिसमें मैं भी थी। हम लोगों ने मिलके एक अपने अपनी रिकमेंडेशन दी। मैंने लाइवलीहुड पे दिया और एजुकेशन पे रिकमेंडेशन दी थी। तो वो जाके एक PIL के रूप में नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, और जो कि बाद में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का इसमें और हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया, हमें एस्टेब्लिश नहीं किया, बनाया नहीं गया था, क्योंकि ये ऑलरेडी कुदरत में सदियों से, प्रकृति जब शुरू हुई, जीव जब बना, तो तृतीय प्रकृति साथ में रही है, तीसरी चीज हमेशा साथ में रहती है। बाय डिफॉल्ट हम सोचते हैं नर और नारी होता है, नहीं, तीसरी चीज भी साथ में रहती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टेपनी साथ में रखते हैं ना। कहीं को कल को गाड़ी खराब हो जाए तो हमारे पास स्टेपनी तो साथ में रहती है, तो हम उसको उसका जो टायर है वो बदल सकते हैं। इसी तरह कुदरत ने अपने आप ऑलरेडी हमें साथ में रखा है, नर और नारी के। तो ये जो डेवलपमेंट हुई ट्रांसजेंडर की, लेकिन जो होमोसेक्सुअलिटी में 2001-2 में हम नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और जिसको 2009 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को भी लीगलाइज कर दिया था। और 2000, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया, और उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज होना तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा से इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन दूसरे ही साल 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रांसजेंडर को अलग से थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करते हुए उनको सारे अधिकार देने के लिए बात की। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी हिदायत दी, और 6 महीने का टाइम दिया कि आपको इनके लिए सारे अधिकार जो मेल और फीमेल के हैं, और जो रिजर्वेशन वगैरह, जिसमें काफ़ी अच्छी जजमेंट थी, वो आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी उसमें हमें OBC में रखा गया, बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ों में बात हुई, लेकिन सेक्सुअलिटी पे बात नहीं हुई। मतलब हमारे हमारे आइडेंटिटी पे बात हुई, लेकिन हमारी मैरिज पे बात नहीं हुई, हमारे पार्टनर के लिए बात नहीं हुई। क्योंकि वो इसलिए बात नहीं हुई, अगर हमारे सेक्सुअलिटी या हमारे रिलेशन की बात होती तो 377 वायलेट होता था, तो इसलिए वो पार्ट छोड़ दिया गया। बाकी सारी रिकॉग्नाइजेशन हुई, क्योंकि एक 3-4 महीने पहले उन्होंने ही होमोसेक्सुअलिटी को बैन, मतलब इसको क्रिमिनलाइज कर दिया था, इसलिए उन्होंने उस पर बात नहीं कर सकते। ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि एक तरफ आप ट्रांसजेंडर को सेक्सुअलिटी पे भी उनको लीगल कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो 377 फिर वो वायलेट होता था। तो उन्होंने सेक्सुअलिटी पे बात नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी पे बात की। तो एक तरफ से इसको LGBTIQ मूवमेंट से इसको अलग कर दिया, ट्रांसजेंडर को। ट्रांस लोग अब अलग हो गए, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। सिर्फ उनकी सेक्सुअलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क रह गया, बाकी तो उनको सारे जो फैसिलिटीज थी वो सोशल एंटाइटलमेंट वो सरकार को देने को कहा गया। लेकिन 6 महीने क्या, 6 साल हमने वेट किया, नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने पार्लियामेंट का रुख किया। पार्लियामेंट के जो हमारे सदस्य थे उनको हमने सेंसिटाइज करते रहे धीरे धीरे, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनको हमने सेंसिटाइज किया। और उसमें थावर चंद गहलोत जी जो मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने काफी अच्छा स्टेप लेते हुए उसमें बिल पे बात की। और 2000 दो बार ये बिल बना, 2 बार इसमें करेक्शन, मतलब काफी सारी इसमें करेक्शंस हुई, और 60-70 जगह पे हम लोगों की ऑब्जेक्शन थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया गया। और थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई, 8-10 जो जिसमें हमें प्रॉब्लम है अभी, वो अभी वैसी की वैसी हैं, जिसमें आइडेंटिटी का भी है और अडॉप्शन का भी है, बहुत सारी चीज़ों पे है। रेप का कानून जिसमें सजा का प्रावधान, वो भी हमें प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन चलो हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट हमारे पास बिल आ गया, हमारे पास लॉ आ गया, हम आगे इसको बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2013 में जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, उसी पे ही उसी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और माननीय जो जज थे, उन्होंने उस पर कहा कि हमें LGBT कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उनको बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है। तो ये काफी सारी चीजों से बात हुई। ये सब चीजें आप सबको पता ही है, क्योंकि आपने जजमेंट पढ़ी होगी। जितनी भी जजमेंट आई हैं करीबन 2001 से लेकर 2019 जो 18 तक, उसके बाद पार्लियामेंट के बिल पास हुए, पार्लियामेंट के बिल जो बने 2-3 बार बने हैं, वो भी आपको पता ही है। और अब रूल्स आ गए, 2020 में एक्ट बना और फिर रूल्स भी आए। हालांकि ये बहुत कठिन काम है कि एक रूल तो बन गए हैं, लॉ भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट नहीं मिला। डेढ़ साल हो गए हमने अप्लाई किए हुए, उसमें लिखा है 30 दिन के अंदर मिलना है, लेकिन किसी आगे कान पे जू नहीं रेंगती है। हम थक गए हैं, हमारी चप्पल जूती घस गए हैं DC ऑफिस जा जाके, SDM ऑफिस जा जाके। वो तो हमें लड़का ही मानते हैं। वो अपने अभी अपनी अपनी ख्यालों में खो रखे हैं, और हमें जो अधिकार देने चाहिए वो नहीं दे रहे। उनको लगता है कि हमने जेंडर चेंज किया। अरे भाई, इसमें लॉ में लिखा तो है ना, ट्रांसफर ऑफ जेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या था? जो जेंडर चेंज करे वही तो ट्रांसजेंडर होगा। उनको पता है, वो सोचते हैं कि जो पैदा होते हैं वही ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन वो ट्रांसजेंडर, दे आर नॉट ट्रांसजेंडर, दे आर इंटरसेक्स। दे कैन बी ट्रांसजेंडर, वो अपना जेंडर चेंज करेंगे, वो भी ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। सो और हिजड़ा जो वो सोचते हैं हिजड़ा कल्चर में जो रहते हैं वो असली हैं, ऐसा नहीं। सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। वो कल्चर है, उस कल्चर में जो जाएगा वो हिजड़ा करेगा, जो नहीं जाएगा वो ट्रांसजेंडर रहेगा। और इसमें ट्रांस मैन भी हैं, जो फीमेल टू मेल है, उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं, वो सिर्फ साड़ी वालों को मानते हैं ट्रांसजेंडर। अरे ट्रांस मैन क्यों पहनेंगे साड़ी? भाई वो अपने आप को पुरुष मानते हैं, और उनको रिकॉग्नाइजेशन बहुत कठिन से मिलती है, उनको माना भी नहीं जाता वो ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन हम अपने इतिहास भूल जाते हैं। महाभारत में शिखंडी ट्रांस मैन थे, वो हिजड़ा नहीं थे, वो ट्रांस मैन थे। उनका नाम अंबा था, वो अंबा के रूप में पैदा हुए थे, वो फीमेल के रूप में पैदा हुए थे। वो 3 बहनें थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। जो अंबा थे
भीष्म पितामह तीनों को किडनैप करके ले जाते हैं। उनमें से एक को उनका भाई रिजेक्ट कर देता, अंबा को। फिर वो उसको श्राप देते हैं कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूं। तो वो द्रुपद के घर में फिर वो पलती बढ़ती हैं, आगे अपने वो द्रौपदी का भाई बनती हैं, और वो अपने आप को मैन के रूप में, आदमी के रूप में प्रस्तुत करता है, और महाभारत में सेनापति, अर्जुन का सेनापति बन जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत लॉन्ग हिस्ट्री, हमें आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं, ना हमें अपने इतिहास के बारे में पता, ना हमारे अपने हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म की, लेकिन हमें धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि हम है कौन। सिर्फ हम बातें ही करते हैं। हम मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं, हम मंदिरों में तेल चढ़ाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम चढ़ा क्यों रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो मैं अपने धर्म की पूरा सम्मान करती हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है उसका पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा है। रामायण में बहुलिंगीय समाज की कल्पना की गई है, उसमें किन्नर गंधर्व यक्ष की बात हुई, उसमें ट्रांस मंकी, ट्रांस बियर, ट्रांस गरुड़, ट्रांस स्नेक, कितनी आइडेंटिटीज हैं। आज मैं ट्रांस वुमन बोल रही हूँ अपने आप को, मैं ट्रांस वुमन हूँ। आप लोग नहीं मान रहे हो कि ये तो आदमी है। कल को कोई बोलेगा कि मैं ट्रांस गरुड़ हूँ या मैं ट्रांस बियर हूँ, तो आप कहोगे ये पागल हो गया। ठीक है। तो ये, लेकिन रामायण में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो जामवंत थे, और नल नील थे, गरुड़ थे, जिनका आधा शरीर पुरुष का था, आधा गरुड़ का था। इसी तरह की जो चीजें हैं, कोई गरुड़ जैसा नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को मानता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उन पर हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं धर्मों में, शास्त्रों में। और धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग आए, इसको तहस नहस कर दिया उन लोगों ने 1857 के बाद। जो भी चेंजेस किए हैं, जो लॉ आप लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादातर आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई हुई हैं, और उसी पे हम चल रहे हैं। अब काफी काफी सारी चीजें बदल रही हैं। जो इंग्लैंड ने यहाँ हमें हमें तो गलत सिखा के चले गए, और 1960 में 62 में उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और ट्रांसजेंडर को राइट्स दे दिए, और हमें हमें गलत चक्कर में फंसा के चले गए। हम लोगों को ऐसे चक्कर में फंसा गए कि 200 साल हो गए, हम उस चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और उससे पहले तो हमारे इंडिया में कभी भी एलजीबीटी कम्युनिटी से नफरत नहीं किया। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें हमें फांसी की सजा हो, कोई ऐसा कानून जिसमें जेल हो जाए, कोई ऐसा कानून नहीं है। इसीलिए तो खजुराहो टेम्पल बने हैं। अगर खजुराहो टेम्पल आप हमें अगर हमें लगता है कि सेक्स टैबू था, सेक्सुअलिटी टैबू था, जेंडर आइडेंटिटी टैबू था, तो फिर खजुराहो टेम्पल ना बनते और कामसूत्र ना लिखा जाता है। तो हमारे भारत में इसकी मतलब ये टैबू नहीं था, इस पे चर्चा होती थी। शंकराचार्य जी जो थे, आदि गुरु शंकराचार्य, वो एक डिबेट में हार गए थे। वो थी सेक्सुअलिटी, जिसमें वो उभय भारती से हार जाते हैं। मुंडन मिश्र की वाइफ थी उभय भारती, बहुत बड़ी ज्ञानी औरत थी, और उनके से वो हार जाते हैं। तो मतलब एक छोटी छोटी मैं रेफरेंस दे रही कि इस तरह का हमारा इतिहास रहा है कि जो आज हम लोग जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप अपने जैसे मर्द और औरत को अपने जानने के लिए जरूरत थोड़ी है, आप किताबें थोड़ी पढ़ते हैं पुरुष ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है। आज सिर्फ ट्रांसजेंडर को जानने की, ट्रांसजेंडर को जाना जा रहा है, जिसकी नौबत ना आती कि अगर हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि उनको नॉन बाइनरी रखते हैं, उनको बाइनरी में ना फंसाते हैं कि तुम पुरुष होते हैं औरत होती हैं, उनके सामने जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ बाइनरी ना रखते, उनको जेंडर फ्लूइड बनाते, उनको जेंडर न्यूट्रल बनाते अपने बच्चों को, तो आज वो इस तरह की चक्कर में ना फंसते कि ये लड़का है, ये लड़की है। हमारा जेंडर न्यूट्रल समाज होता है, और आज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा समाज का निर्माण करें इसमें जेंडर न्यूट्रल रहे सब लोग। इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हमारा समाज जेंडर न्यूट्रल रहे, और डिस्क्रिमिनेशन के बिना एंटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई मोटा काला जितना जैसे भी है इंसान, छोटा है बड़ा है, इस तरह के जो बुली होती है, हैरासमेंट होती है, महिलाओं पे तंज कसे जाते हैं, पुरुषों पे भी कई पुरुष जो महिलाओं जैसे चलते फिरते हैं उनके भी तंज कसे जाते हैं, कोई काला है कोई गोरा है। तो ये जब चीजें हमें सिखाई जाती है बचपन से। और हमारे जो कपड़े हैं, जो फीमेल वाले कपड़े हैं, कपड़ों का भी इंफीरियर और सुपीरियर होता है। जो फीमेल कपड़े पहनते हैं वो इंफीरियर होते हैं, पुरुष जो कपड़े पहनते हैं वो सुपीरियर होते हैं। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जब भी ट्रांस मैन या लड़कियां पैंट शर्ट पहनती वो मर्दानी हो जाती है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी, वो मर्दों वाला पैरामीटर हो जाता है।
का अच्छा माना जाता है कि शाबाश पुत्र मेरा, तू मतलब मेरा पुत्र है। लेकिन अगर कोई पुत्र पुत्री वाला कपड़े पहन ले तो वो तो घर से निकाल देते हैं कि तू अच्छा खासा बंदा, तू एक ही कंजर खाने के तैयार। मतलब ये सारी चीजें हैं। और औरत कोई नहीं बनने देता है। हमारे पंजाब में तो कहते हैं बंदा बन जाओ, कोई ये तो नहीं बोलता कि बंदी बन जाओ। ठीक है, तो सब लोग जो भाव है हमारे यहाँ, पुरुष बनाना चाहते हैं, औरत किसी को नहीं बनना चाहते। लेकिन हम लोगों ने ढीठ बन के, हम लोग तो फिर मैं वही कहूँगी, हिजड़ा जो होता है ना, हमारे जो हिजड़ों डेरों में मैं भी रही हूँ, तो हमें ये सिखाया है, हिजड़ा बनो, औरत मत बनो। औरत बनोगे तो लोग बहुत बहुत सताएंगे, इसलिए हिजड़ा बनो, मर्द सत्ता को ललकारो, मर्दों को ललकारो कि भाई तुमने साड़ी नहीं पहनी, हमने साड़ी पहन ली। देखो, हमारा एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में, हिजड़ा हब्बा, तो हमने गौतम गंभीर जी को बुलाया था, वो दिल्ली के सांसद हैं, उस फंक्शन में चीफ गेस्ट में। तो उसमें जब उनको बुलाया गया तो हम लोग सरप्राइज थे, हम लोग गौतम गंभीर जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमारे बीच में चल रहे थे, वो साड़ी पहन के आए थे। तो ये देखिए, मतलब एक सॉलिडरिटी के लिए कि मैं भी आपके साथ हूँ। साड़ी पहनने से ये कोई हिजड़ा नहीं हो जाता है या ट्रांस वुमेन नहीं बन जाता है। वो देखो, वो तो इंटरनल है, ये हमारा सब कुछ अंदर है, हमारे जो साइकोलॉजिकली हम लोग क्या मानते हैं। हमारा जो ब्रेन है मैम, वो हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारी प्रोग्रामिंग है। इसी को तो हम बचाते हैं हेलमेट पहन के। सारे शरीर में हेलमेट थोड़ी पहनते हैं। अगर अगर हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या शरीर का कोई भी लिंग भी कट जाए, तभी हम जिंदा रहेंगे। किसी का लिंग कटने से कोई हिजड़ा थोड़ी होता था। कोई पुरुष का अगर ट्यूमर हो जाए, किसी उसके टेस्टिस में या उसके लिंग में कैंसर हो जाए, उसको लिंग को निकालना पड़े, तो वो ये थोड़ी बोल रहे मैं लड़की बन गया हूँ। ये तो सब यहाँ पर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर ये जो मैसेज देगा वही हमारा शरीर करेगा। इसी को बचाया जाता है। जब ब्रेन डेड हो जाता है तो इंसान मर जाता है, पागल हो जाता है। तो इसमें इसको समझने की जरूरत। हम कहाँ खोज रहे हैं जेंडर को? अंडरवेयर में। अंडरवेयर में जेंडर नहीं होता है। शरीर की कोई औकात नहीं है। अगर ब्रेन कहे तुम लड़की हो तो लड़की ही बोलेगा वो, मैं लड़की हूँ। तो ये जो चीजें हैं, कुदरत की चीजों को समझना है। नेचर इज इनविजिबल, नेचर इनविजिबल होती है, इसको समझना इंसान के बस की बात नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और लॉ जो बने हैं उसको उसको मानना है, उसको पढ़ना है, उसको और इम्प्रूव करना है। आप सबसे जो लॉ के विद्यार्थी हैं, मैं यही कहूंगी कि आप वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड एक्सेप्टेंस। वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हमें फैमिली में एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो हमें कोई रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े, इतने सेमिनार की जरूरत ना पड़े, हमें फीस माफी की जरूरत ना पड़े, हमें सेपरेट कुछ भी जरूरत ना पड़े। सिर्फ हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। हम अपने आप करने को तैयार हैं। हम पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन जाए, लॉयर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे। हम लोग तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे एक दिन, देखना। और एक दिन ऐसा आएगा कि देश का प्रधानमंत्री किन्नर ही होगा, मैं ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन ही होगा। तो ये दिन आने वाला है, और मैं मरूंगी नहीं जब तक ये चीजें होंगी नहीं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो बहुत स्ट्रगल करके लिया। 93 में मैंने, आई वॉज टॉपर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया था, बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, और एमए में एडमिशन लिया तो मुझे निकाल दिया गया, रैगिंग की गई थी मेरे साथ एमए डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर 94 में मेरा लॉ में एडमिशन, जैसे आप लॉ कर रहे हैं, मैं भी लॉ में एडमिशन लिया था इवनिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के। और मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे इसमें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ था, और कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 सब्जेक्ट थे उस समय मैं पढ़ रही थी। और आज मैं एडवोकेट, अच्छी बहुत बड़ी सीनियर एडवोकेट होती। 94 में मैंने, लेकिन मेरे को फिर रात को एक कमरे में बंद करके लड़कों 10-12 लड़कों ने रेप करने की कोशिश की, तो मैं भाग गई वहां से। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं आई, दबंगी पूरी चलती थी। इतना रैगिंग होती थी बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ाई करना। फिर मैंने डिप्लोमा किया, रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, फ्रेंच में डिप्लोमा किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया। धीरे धीरे बाद में मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया। और फिर मैंने कहा, मैं फिर अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ती रही। 2002 में मेरे साथ गैंगरेप हुआ। मुझे किडनैप करके अम्बाला ले जाया गया। 20 लड़कों ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया, और अम्बाला की
बस स्टैंड पे मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। वहां से बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ आई बस में बैठ के, और जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने मेरा कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया, मुझे मेरे पे मजाक मतलब मजाक बनाया गया मेरा। और मुझे कहा कि तुम ही क्रिमिनल हो, तुम ही खुद गए होंगे उनके साथ, अदरवाइज कोई किसी का मजाक नहीं। पर वो समझ ही नहीं पाए मेरे को और मजाक बनाते। फिर मैंने वहां से चले गया और मैंने ठान लिया कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, फांसी लगा दूंगी। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। रात को 12-1 बजे करीब मैंने वहां पे घर से और जंगल में जाकर मैंने पेड़ पे रस्सी टांगी और गले में टांगने की कोशिश की। तो फिर दिमाग में आया कि धनंजय तुम क्यों मर रही हो, तुमने कौन सा रेप किया है, तुमने कोई समाज में कोई ऐसा गलत काम ही नहीं किया, तुमने करप्शन नहीं किया, तुमने किसी डकैती नहीं डाली, फिर मर क्यों रहे तुम मर गए तो 2-4 दिन सब लोग रोएंगे, उसके बाद सब चेंज। जो जिन्होंने रेप किया वो तो घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं मरूंगी, मैं ऐसे लोगों की सोच को मारूंगी और समाज को बदलूंगी। मैं समाज में फिर निकल पड़ी और 2004 में दोबारा रेप हुआ। 8 लड़कों ने मेरे पर रेप करने के बाद मारा पीटा और पेशाब कर दिया। तो ये चीजें भी हुई, लेकिन मैंने मरने की नहीं सोची। मैंने कहा नहीं, मैं जिद्दी रही और मैंने कोशिश की समाज को बदलने की। धीरे धीरे ये चीजें होती रही और 2009 में फिर मैंने एक एनजीओ बनाया। 2012 तक आते आपको पता ही, फिर नालसा की जजमेंट में मैं भागीदार बनी। उसके बाद 2013 में मैंने एलजीबीटी प्राइड ऑर्गेनाइज किया, अकेले ही, कोई मेरे साथ नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज आप लोग सेमिनार कर रहे हो, लेकिन 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, इससे समाज गंदा हो जाएगा, ये सब बोला उन्होंने। पर उनको नहीं पता था कि धनंजय क्या चीज है। मैंने धीरे धीरे अपने प्राइड ही, मैंने कहा नहीं, परमिशन दोगे कोई बात नहीं, मैं हम लोग भी यहीं से करेंगे प्राइड। हम लोग ने प्राइड किया, 2014 में भी किया। 14 में फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। 2015 में फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को बोल के वहाँ पर उनके थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवाया उनके एडमिशन फॉर्म में। और खुद भी सारे डॉक्यूमेंट अपने ट्रांसजेंडर के चेंज किया, मेल टू ट्रांसजेंडर। और बहुत लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज किया, पढ़ो अब थर्ड जेंडर कॉलम ऐड हो गया। लेकिन कोई भी ट्रांसजेंडर आगे नहीं आया। हिजड़े लोगों ने मेरे को धमकियां देना शुरू कर दी कि खबरदार तुम पढ़ने गए, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मैंने उनकी धमकियों से डरी नहीं। और मैंने, जब कोई नहीं पढ़ने आया तो मैंने खुद ही एडमिशन लिया 45 साल की उम्र में, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक एमए थी सोशल वर्क में। और मैंने सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था। उसके बाद स्ट्रगल हुआ सेपरेट वॉशरूम का। मुझे वॉशरूम में कोई भी जाने तो देते थे, लेकिन मजाक बनाते थे, हंसते थे सब लोग। तो फिर मैंने सेपरेट वॉशरूम के लिए लड़ाई लड़ी और 15 दिन बाद मेरे को जो मैंने चिट्ठी लिखी थी, 15 दिन बाद वो उसका रिप्लाई आया वाइस चांसलर से कि आपके लिए आपकी जो मांग थी सेपरेट वॉशरूम को मंजूर होगी। इसमें 23 लाख रुपए बजट पास हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेपरेट वॉशरूम बने और इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पूरे भारत में जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम बने। उसके बाद मैंने फीस माफी के लिए स्ट्रगल किया कि हम लोग फीस कहाँ से दें, हम लोग भीख मांगे, सेक्स वर्क करें, क्या करें, फीस कौन देगा हमारी। तो उन्होंने कहा स्कॉलरशिप ले लो। मैंने कहा नहीं, स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, स्कॉलरशिप में भी आपको फीस पहले देनी होगी और उसके बाद 1-2 साल बाद रिटर्न होगा। तो वो पैसा आएगा कहाँ से देने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, हम कहाँ से दें, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भीख मांगे स्टूडेंट्स के सामने कि 10-10 रुपए दे दो, मुझे फीस जमा करनी है। तो मैं कहा यूनिवर्सिटी को भिखारियों की यूनिवर्सिटी मत बनाना, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर समझा उस बात को और पंजाब यूनिवर्सिटी ने फ्री एजुकेशन किया ट्रांसजेंडर के लिए। उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल भी बना और चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना। साथ ही बहुत सारी पॉलिसीज पे काम करना मैंने उनको बात दिखा, फोर्स किया कि आप ये करिए। हॉस्टल की बात रह गई थी, हॉस्टल की अभी मांग चल रही है। टेम्परेरी हॉस्टल दे दिया, बहुत मुश्किल से दिया गया। पंजाब ने मना कर दिया था कि हॉस्टल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने भी पूरी कमर कस ली थी कि हॉस्टल लेके छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। हम लोग भी उनको काफ़ी फोर्स किया, तो जाके पंजाब यूनिवर्सिटी मानी है और टेम्परेरी उन्होंने दिया। लेकिन हमें मुझे वो मंजूर नहीं था टेम्परेरी वाला। मैं कहा अगर कल को दूसरे 2 साल 3 साल बाद फिर कोई ट्रांसजेंडर है, वो
वो फिर डिमांड करेगा दोबारा से। तो हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल रखी है जिसमें हमें परमानेंट हॉस्टल की मांग की गई। और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को बुलाया और उनको कहा कि आप ट्रांसजेंडर पॉलिसी बनाइए, विदाउट पॉलिसी हमारे पास मत आना है। तो ट्रांसजेंडर पॉलिसी भी बनेगी। अब हॉस्टल हॉस्टल के लिए भी बात चल रही है। तो अब सब कुछ जब ऊपर से ऑर्डर हो जाएंगे तो इनको करना ही पड़ेगा। और ये हम लोग किसी के व्यक्तिगत कोई वो नहीं, किसी दुश्मनी नहीं है। हम तो सरकार से ये कानून से मांग रहे हैं। हम जैसे मर्द और औरत के लिए है वैसे हमारे लिए भी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर पॉलिसी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और इस तरह से हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, सोशल एंटाइटलमेंट जॉब्स का है। बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। और साथ साथ ताकि, और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बाहर आना होगा। ट्रांस कम्युनिटी को जब तक बाहर नहीं आएगी अपनी आइडेंटिटी के साथ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन जब तक हम बाहर आकर अपनी डिमांड नहीं करेंगे, वो चीज़ें अवेल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलना है। अकेले इंसान से लड़ी भी नहीं जा सकती, कितना वो लड़ लेगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें में चेंज आ रहा है। तो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बोला, नकली है असली, पर मैं स्ट्रगल करती रही। people say you people are disorder, मैंने कहा yes I am disorder because I never follow order। मैं क्यों ऑर्डर फॉलो करूँ? तो ये सब चलता रहा, बुली हैरेसमेंट हुआ। लेकिन धीरे धीरे मेरी इमेज अच्छी होती गई और मुझे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने डिनर पे बुलाया और सिटीजनशिप के लिए ऑफर भी किया। बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मुझे भारत में ही रहना है, मुझे भारत छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं अभी। अगर मैं यहाँ से छोड़ के कनाडा चली गई तो फिर यहाँ पे काम रुक जाएगा। और ये सब चीज़ें जो बदलाव की जो चीज़ें चल रही हैं वो फिर वहीं पर ठप हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें, देखो, सेक्रीफाइस थोड़ा चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं ट्रांस अपने बहनों भाई को ये कहूँगी कि थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन 20-30 साल बाद, 40 साल बाद हमें बदलाव बिल्कुल दिखेगा। और ट्रांस वुमेन पढ़ते हुए नौकरी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें चलना होगा, थोड़ा सा समाज को चलना होगा, और बराबर ये कदम पे कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर बदलाव जरूर आएगा। और इसमें मिनिस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री उसके स्माइल स्कीम्स आई हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी बहुत बहुत दिक्कतें हैं। मतलब ऑफिसर लेवल में 2-4 लोग सेंसिटाइज हैं, लेकिन पूरी एक पलटन जो है ऑफिसर्स की, वो सेंसिटाइज नहीं है। उनको सेंसिटाइज करना है। और मैं मास्टर ट्रेनर पंजाब पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, बहुत सारी और चीज़ों में ट्रेनिंग देने जाते हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बदलाव मैं देखती हूँ कि ज़रूर आएगा। और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगी। ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता है। सो ये चीज़ें हैं। और इसमें दिक्कतें ट्रांस वुमेन को आती हैं, ट्रांस मैन को भी। लेकिन दिक्कतों के बावजूद चाहे वो परिवार एक्सेप्ट करे ना करे, वी पीपल आर फेबुलस। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। फीमेल्स जो है, आप सब औरतें, बायोलॉजिकल परमात्मा ने आपको ऐसा पैदा किया है, लेकिन हमने स्ट्रगल करके उस वुमेनहुड को पाया है। औरत औरत होने का हमारे खिताब जो हमने स्ट्रगल करके पाया है। तो वो चीज़ हम होना नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों को और आगे बढ़ के समाज में और अच्छा करना चाहते हैं। सो थैंक यू आप सबका। और आपने मुझे मौका दिया में बोलने का। तो मैं जो थोड़ा बहुत जो कर पाई हूँ और जो कर रही हूँ, जो आने वाले समय में जो होगा, वो बदलाव आप सब लोग देखेंगे। और थैंक यू अगेन। Thank you, ma'am. Thank you for acquainting us with the problems faced by the transgender community. I hope that all of us can together create a better and safer space for the community. Before moving on to the next speaker, I would like to request all the speakers to kindly limit their speeches to around 20 minutes so that we have enough time for all the speeches as well as the question answer round. Now, I would like to invite our second speaker for the colloquium, Ms. Kanika Jambal, to address us. Ms. Jambal is currently working as an assistant professor at Jindal Global Law School. Having completed her LLM from LSE London, her primary areas of interest include public international law, environmental law, and gender justice.
Ma'am, I would like to yield the virtual floor to you for you to kindly address the audience. Thank you so much, Chavi, for sort of having having me over. And a very good morning to everyone. And not really a guest speaker, just back to where I did my undergraduation from. But it's actually my honor to be a part of this panel today, and I'm immensely grateful to the Vice Chancellor, the Registrar, and of course to Dr. Vasi and the entire team of LAC, and yes, the Department of Justice for having me and for organizing this colloquium. Uh, just thinking about the broader conversation that we are having today on the right of identity of members of the LGBTQ plus community and the idea of gender fluidity. And when I was thinking about it yesterday and just my bit of my research that's focused on particularly within this area, the one thing I think that becomes evident and has been obvious for a very long time now that we need to let our expression move beyond the binary. We need to stop expressing ourselves in binary terms. We need to stop expressing gender in binary terms. And then as a lawyer, I ask myself, well, what does the law do in this context? Does the law express itself in binary terms? And more importantly, the laws that relate to sexual offenses, something also that Dhananjay touched upon in her talk. And then this inquiry brings me to the question of gender neutrality. What is gender neutrality? Are our laws relating to sexual offenses gender neutral, or are they gender specific? And now, when I did this research in 2018, I focused on sexual harassment, particularly because while there has been discourse on gender neutrality of rape laws, I found absolutely no discourse back then, at least, on gender neutrality of sexual harassment laws. And sexual harassment is a broader category of offense, which then covers several acts within its ambit, some of which may constitute particular offenses under the Indian Penal Code. That is not to say that the discourse on rape and gender neutrality in that context is not important. In fact, most of the arguments that I engaged in were drawn from the debates of gender neutrality on rape laws. But then it is just to broaden the protection that is sought to be given through this debate on gender neutrality of laws relating to sexual offenses. What is the first question is, of course, then what is this term gender neutral? What is gender neutral? Now, in the context that I'm speaking particularly, gender neutral would be an expression which includes all genders. To give you an example, the term chairman becomes chairperson, right? In your laws, man equates to then person, woman equates to person. That would be a gender inclusive term or a gender neutral term, right? One that doesn't specify or doesn't give a sense that it only refers to one gender. Coming to particularly the laws on sexual harassment, when you look at the Indian Penal Code, most of your laws, most of the sections on sexual offenses, including the one on sexual harassment, expresses gender only in binary terms, to a point where it says that the perpetrator will always be male and the victim will always be female. When you particularly look at the law on sexual harassment at the workplace, which is the
Prevention of Sexual Harassment at the Workplace Act, which was also the focal area of my research, there you see something called partial gender neutrality. In the sense that it says the victim will always be an aggrieved woman, but it says the respondent can be any person. Now, meaning that any person can sexually harass, but only a woman can be a victim of sexual harassment. And that's something which is called partial gender neutrality, where either the perpetrator or the victim is then gender neutral. And currently in the Prevention of Sexual Harassment at the Workplace Act, which is the POSH Act, the perpetrator is gender neutral while the victim is gender specific. Now, just briefly about the act before we sort of engage into this discussion about gender neutrality. I'm going to not go into how the act came in. I think, for those of you, and I think most of your law students here, you know about the Vishakha decision, which kind of then gave way to this act in 2013. But the interesting thing about this act is that it gives maximum protection and the widest possible protection. So you look at the definition of, basically the idea of the act is that an employer should ensure that their workplace is safe, not only for their employees, but also for third party women visiting the workplace. Meaning that when you look at the definition of who's an aggrieved woman, it says that it is an employee or a third party visiting or a third party woman visiting a workplace who's not an employee. And then you look at the definition of employee and you see that the definition is wide enough to not just cover women who are employed on a salary or for some sort of remuneration, but also women who are volunteers in a workplace, right? And then you look at the definition of workplace, again, a very wide definition, which includes any private venture. The reason why I'm going through these definitions is just to explain how wide the ambit of this act is. And most interestingly, and I think laudably so, the act extends to the unorganized sector, which means that it covers domestic setups, it covers dwellings, and it covers any establishment which has less than 10 people also. Now, the Delhi High Court in its decision has said that, see, sexual harassment is not what the perpetrator perceived or intended, but the perception of the victim. How the victim perceives it is what is sexual harassment. Now, with that context, I'm going to move into the conversation on gender neutrality. And I know that there's a specific section for Q&A at the end, but in case there are any questions at any point during the session also, at least my talk, please feel free to just ask me. Now, like I said, gender neutrality can be of two types. Can be complete gender neutrality, can be partial gender neutrality. When I talk about complete gender neutrality, I'm looking at when both the perpetrator and the victim are gender neutral, meaning that any person can sexually harass any person. And when I look at partial gender neutrality, then it's basically talking about either the perpetrator or the victim is gender neutral. In the POSH Act, you see that the perpetrator is gender neutral while the victim can only be an aggrieved woman. Now, of course, like I said, the Indian Penal Code is not gender neutral. It sort of conceptualizes a male perpetrator and a female victim. And the POSH Act, it's perpetrator-based gender neutrality. And now there's another interesting dichotomy here. See, under the POSH Act, the victim has the right to file a criminal offense under the IPC if an act constitutes an offense. They may proceed under the
Act, under the Prevention of Sexual Harassment Act, which is basically you file a complaint with the Internal Complaints Committee or the local complaints committee, as the case may be. But they also have the option of going and filing a complaint under the IPC if an offense is made out there. Now we know that under the POSH Act, the perpetrator can be a person belonging to any gender, but the victim can only be a woman. Now, say if there is a perpetrator who's not male and sexually harasses a woman, and the woman wants to proceed under the IPC because it's an offense under the IPC. Say it's a sexual offense, say it's stalking. They can't proceed under IPC because IPC is gender specific. It says that only a man can stalk a woman, or for that matter, with regards to sexual harassment or also rape, only a man can do so. So there is this gap or incoherence between the two laws, while there is still an option for the victim to go and complain under the IPC and lodge a prosecution against the perpetrator. Now, coming to the main arguments that with regards to gender neutrality, whether the law should be completely gender neutral or not. See, there are certain arguments that have been made in favor of it, where one of the first arguments is that, see, sexual harassment, and of course it's made in the context of rape. Again, I am drawing parallels to the law on sexual harassment because at the end of the day, they're both sexual offenses that are sexual in nature. It said that sexual offenses are essentially an act of male dominance. And this is Catherine McKinnon, who's a feminist legal scholar from America, who's talked about how sexual offenses are not simply crimes that are done in furtherance to satisfy sexual desires, rather an act of male dominance, meaning that it's a show or display of power to anyone against anyone who doesn't fit that criteria of what a man would be, right? And so it is not just may not just be targeted against women, but against any person who then doesn't fit that idea of toxic masculinity, essentially, right? The other being, and this is something that the Vishaka judgment also says, that, see, sexual harassment violates Article 21, which is the right to life. So if it violates Article 21 for women, why does it not violate the right to life of any other person who may be sexually harassed? So therefore, these two arguments have been put, amongst others, in furtherance of, while arguing for gender neutrality of sexual harassment laws. Now, with respect to rape laws, there was illustrated support for gender neutrality in the 172nd report of the Law Commission and also in the Criminal Law Amendment Bill of 2012. Eventually, of course, a gender-specific term was retained, but at least there was support in that sense. Now, there's also been academic writing of feminist legal scholars, which has talked about how which is given essentially arguments against gender neutrality. And these are interesting because one of them, the first sort of main argument that's been given, and this is against complete gender neutrality. They're arguing against complete gender neutrality. And they're saying that, see, if you make the perpetrator and victim both gender neutral, in any case, there is a significant male dominance when you look at leadership positions in and beyond workplaces also. And it is anyway difficult for women or for people who don't identify with the binary genders to raise a complaint. There is this, given the deeply patriarchal setup, it is difficult to even raise a complaint, come out and actually raise a complaint that I've been sexually harassed. In that, now, if you also make the perpetrator gender neutral before a person belonging to a gender which is not male
can go and file a complaint, the male may come and file a complaint against that person that, oh no, this person sexually harassed. If both the perpetrator and the victim are gender neutral, then there is this threat of counter complaints, which is arguably then very real. The male might come and first say that, see, this person sexually harassed before the victim can actually go and file the complaint. So that has been one of the major arguments that's been put forth against this idea of complete gender neutrality. And the other is, of course, that the experience of harassment that is faced by men and that is faced by a person belonging to any other gender is very different. And the one that relates to a person belonging to any other gender is much more severe than what a man may feel. Although this argument I personally don't, I think this is not a very strong argument to make, because merely I feel that, of course, there is a difference in the lived experience. There's a difference in the severity of impact. But does that mean that we must not give protection to men, or to say? Also, if you're not making the term gender neutral, then of course it also includes persons belonging to any other gender, right? So these are largely the arguments for and against. Now, what could a possible solution be? And this is something that I've talked about in my research. That you make you go towards partial gender neutrality. And in that, you make let the perpetrator be gender specific, but let the victim be gender neutral, right? Meaning that the perpetrator could only be a man, but the victim could be belonging to any gender. Because this will particularly address the threat of counter complaints. Because if the perpetrator is not gender neutral, then essentially a man can't go and say that this person's harassed me before the victim actually goes, or the survivor actually goes and files that complaint. And of course, it will increase the protection, because then victim can be anyone, while perpetrator, of course, then remains limited to men. There is definitely a lot of argument against this in the context that a lot of legal scholars have argued that, see, only because there is this threat doesn't mean that you don't give protection to men, because you need to address that. You need to address the system. If the system is such that it's difficult for people belonging to any gender apart from men to then sort of come out with their complaints, then you need to address that, rather than not extending the protection to all genders. But in that sense, that change can't happen overnight. That change is going to take some time, and we should certainly, in an ideal situation, yes, we should. Both the perpetrator as well as the victim should be gender neutral. But that change is not going to happen overnight. And while striving for the ideal, we can't strip off the protection that we've already given. And law cannot essentially alienate itself from social realities. I remember my first semester, and I think it was Dr. Basti's class, we were talking about social morality and how does law relate to social morality, right? And that is a fact. You can't make a law which is operating in vacuum from the social realities and the realities that then define the morality of the people. And so, therefore, until we reach a point where this threat of counter complaints is not that significant, I personally believe, and of course, my stance can also change over years. I was at one point, I used to say no, complete gender neutrality. Honestly, when I did this research, during my master's, I said no, complete gender neutrality. It's only over the last 3 years when I've actually taught this that I've gained a more nuanced understanding, perhaps. And I feel that no, it's not. This is not. You go to complete gender neutrality and you'll
basically strip off the protection that you're trying to extend by making these gender neutral, making these terms gender neutral. So that is largely what I wanted to sort of talk about. There was also this sort of, thing that, this point that Dhananjay mentioned about, creating awareness within university setups and colleges about, and then in this context of gender neutrality, I just wanted to sort of highlight this point that with regards to the UGC guidelines on sexual harassment, they're absolutely entirely gender neutral. Anyone can be a perpetrator and anyone can be a victim. Again, the guidelines are very comprehensive, but they're completely gender neutral. And a lot of workplaces actually have sexual harassment guidelines that are completely gender neutral. That's just what I wanted to talk about briefly in this context, gender neutrality, and how does it play out in the context of sexual offenses. So yes, thank you so much, and happy to take any questions at the end of the session. I thank Ms. Kanika for enlightening us with the problems that our laws face by not being gender neutral and how the way forward is by having partially gender neutral laws. Thank you for your time, ma'am. Now I'd like to invite the third panelist, Ms. Kanmani Ray. Kanmani Ray has pursued LLB from Campus Law Center, University of Delhi. She is currently serving as a research associate at Center for Justice, Law and Society at RGNUL Global University. Ms. Ray is interested in working around issues of health, access to education, public transport, and housing in the context of gender and sexual minorities. She has also been actively spreading awareness about the problems that exist in the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. She has been an ardent advocate of promoting fair representation of the transgender community and has been fighting for their rights. I welcome Ms. Kanmani Ray. Over to you, ma'am. I'm incredibly sorry. I had actually prepared a PPT presentation for this session, but somehow my laptop is not allowing for it to present. Can I just rejoin in a minute? Is that okay? Yes, ma'am. Thank you. I'm so sorry for this. Okay, seems to be some issue. So I'll just go ahead and talk about what I'm trying to talk about here. Just keeping the PPT in the background. First of all, thank you so much, Professor G.S. Bajpai and all the organizers and the team at RGNUL for inviting me here. I'm Kanmani R. I'm a transgender woman and an advocate, inexperienced advocate, I would say, enrolled in the Bar Council last year. I passed out of University of Delhi. So my work has primarily been in terms of transgender persons' rights, and I'm currently working at the Center for Justice, Law and Society. Now I'll start off with some of what the center has been doing, and from there I'll explain why it is important, and you'll get what I'm trying to talk about. Mainly, I'll be talking about transgender persons' access to legal education and profession, which I feel is very, very important as an NLU, especially, that we should talk about. So Center for Justice, Law and Society is basically a research center, multidisciplinary research center working at the intersection of law, justice, society, and marginalization in South Asia. We've organized a first of its kind residential certificate course, which does not exist in any other university currently, on rights of transgender, intersex, and gender diverse persons. And on the other things, which I would say when I started writing research papers, in fact, another trans masculine person called G. Semarler actually wrote to me and said, you're probably the one of the only one who is actually citing trans persons while writing about transgender persons issues, and not caring about this academic hierarchy of only wanting to cite, trans, only citing papers which are written by cisgender folks, but there might be smaller articles written by trans folks which doesn't get cited. So it's a cycle, right? Trans persons never get ahead in academia,
And why am I saying this is because in the residential certificate course, 70% of the faculty we try and ensure are transgender persons themselves, which makes a whole lot of difference, because in a universe for transgender persons, and we had transgender persons come from all over the country and educate transgender persons about rights, legal rights, and this was before the act, and after the act, of course, the pandemic came in. So now we are organizing a second one, and it's also a collaborative endeavor. Now, why am I saying all of this is because I just want to start off with this one question, and I want very honest answers. And of course, and I would like to thank first of all Dhananjay ji and Kanika for putting forth the complexities. So these are two questions. Do you have transgender, queer, non-binary colleagues? Since some of you I can sense are faculty in different universities. Did you have, I'm hoping that there are no school students currently here. So did you have growing up transgender, queer, and non-binary classmates? Any of you in any of your colleges? Friends, yes. Colleagues, no. Friends, Classmates? still classmates, because when we were in the class, Kanmani, the issue is that, our own identity was a question, let alone talk about gender fluidity, women studying, women talking about educating themselves. So I'm not even sure that, we were able to acknowledge this when we were in the class, that if my classmates were, they were special, or they were unhappy. I had a junior, and till the time she was in the school, we had no idea. Her journey became significant. She started her journey after graduating, from that school. So now, yes, I can say that one of my juniors that now I know of, definitely my friends, and it's been a long association of 12 years so far. So yes, so friends, yes, colleagues, no. Why did I ask this particular question is because I feel this is the main crux of, in fact, what Dhananjay ji was presenting and what we are grappled with today. This is and why is it important? Because most of us, when we and Dhananjay ji already said this, like most of us associate transgender persons with Hijra communities and persons who are begging on the streets, etc. Right? That stereotype is existing. So and trans communities have been surviving by begging on the streets, sex work, toli badai, etc. But then, how would power shift? Because universities, public universities at least in India, are supposed to be resources by the state to shift power and effect representation and equality in society, right? We are trying to say that the nation should grow and they are engineers of growth, which means that transgender persons, if so, how many of you, I'll ask a very generic question, how many of you buy bathing soap every day? Sorry, every month? Bathing soap, I'm sure everyone does. So there is a small thing component called GST, or a small thing called tax in whatever you buy. And this is an argument made by Grace Banu, a transgender rights activist as well, that as long as we are paying tax, we are contributing to the economy of this country, which means that transgender persons have equal right to the resources of this country, which includes universities and public employment. So, which is why, so when NALSA judgment came in, it upheld transgender persons' right to self-determination. But it took a long time. Many states did not implement the NALSA judgment. And then Natej Singh Johar judgment also came in, as we've already talked about. Now there is a Transgender Persons Protection of Rights Act. The act, of course, mandates equal opportunity policy and a compliance officer in all establishments. And establishments include universities. And I have passed out of Delhi University, and I can say for sure that most universities in India still don't have complaints officer under the Transgender Persons Rights Act. And as legal institutions, as legal education institutions, it is our duty to, because how are we so sure? I just want to ask this very personal question, and it can be a bit triggering, so please feel free to not answer. Parents spend so much time with their children, 20, 25 years, right?
and then struggle to get them married, get them settled, etc. How many parents over here can say for sure that they know their children 100%? Or how many children can say for sure that they know their parents 100%? No one can say that, right? So then how are you so sure that you're spending so little time actually in your workplaces that whoever you're meeting is not trans? Because being trans, as Dhananjay ji opened up, saying that Hijra, a word, is also about a journey, right? So then it's also a journey, right? So why am I also saying this is because a couple of students from NLU Delhi, as part of their student project, did filed RTIs with almost all NLUs in India, and some of the responses that they got was that we don't have any transgender students, which is why we have not made any facilities or changed or put in any policies or procedures. But we have to work with the assumption that we already have trans persons. How are you so sure? Which is my question, because we don't even know our friends completely, right? We don't know our colleagues completely. We spend so little time, which is and Dhananjay ji spoke about an important thing called washrooms. Now you might think washrooms is not a very big deal. Oh my God, what is the big deal? So recently, some time ago, Vidhi Center for Legal Policy released a report on washrooms in courtrooms in India. And in the entire report, there was no talk about actually transgender persons. And there were talk about National Judicial Infrastructure Authority, etc. But there is no talk of transgender persons' access to washrooms in courtrooms. So while we want, so Justice Deepak Gupta, for example, former judge of the Supreme Court, advocated in an international judicial conference that there should be gender justice in the Supreme Court, which means that in higher judiciary, we need transgender judges, right? But as law students here and even common folk would know that becoming a judge, especially in the higher judiciary, is not so simple, right? You need to be an advocate for 20, 30 years. You need to have wide experience, which means that if you want a transgender judge in the Supreme Court of India or in the High Court or any of the high courts of this country, you need to make sure that there is an enabling environment for first transgender advocates to thrive, which is what my entire presentation is all about. That if you want transgender advocates to thrive, even basic things like washrooms in every courtroom of this country would go a long way to making sure that we can access justice. Now, why do we want washrooms? There can be multiple reasons. So at least I'm expecting that I'm assuming that the cis women in this, and please stop me if I exceed the time, I'm not keeping tab on my time. So the cis women in this session would at least understand, I'm hoping, that access to washrooms is a big deal, is a problem. So many transgender persons, including me, I have gone to Delhi University for about a year and a half, who almost every day, without drinking water in the morning, without having breakfast, trying to hold my pee and urine, and going to the washroom only like if the classes start at 9, I go to the washroom at 8 in the morning, which means I start from home at 7. And then after all the classes get over at 7 p.m. in the evening, I go to the washroom there, and then I go back home. And then of course, there's no acceptance at home, so I carry my saris in my bag. That's how I've survived 1.5 years before the pandemic hit. And it's not like transgender persons are not already there. There is Swati Bidan Barua, there is Satishri Sharmila, there is Ankan Biswas, there is Meera Sanghamitra, who passed out with a law degree. There are currently 2-3 more lawyers who have recently come out as trans and who have accessed bar council enrollment as transgender persons. So it's not like transgender persons are not there, but we have become exceptions, not equality, not a generic a reality, but an exception. Why should, so my 1.5 years, for example, went like this. I went to almost every forum in Delhi University, which Delhi University is a big university that could afford a space to me, which meant sometimes even my the current dean of law faculty there told me, why are you missing so much classes? I said, that is the only way I feel that a policy can come in Delhi University.
if there had been a hostel in Delhi University, which could make space for me, I would have avoided the amount of violence I faced with my parents. And what happens in summer vacations when the hostels close down? Because these are stuff that actually universities have to think about. So I'll give you an example. So when we are sitting in an NLU, I have just applied for CLAT PG before the deadline. And how many of you can tell me how much is the cost for CLAT PG? General for unreserved category, 4,000 rupees, right? 4,000. The fee or the form? For fee for the entrance, CLAT. I think it's 4,000 rupees. So then how does CLAT consortium, our NLUs, expect transgender persons to write those exams, many of whom will not have 4,000 rupees to spare? I know transgender persons who are surviving with 50 rupees every day, and there are so many fundraisers that we have to do to raise money for many people to survive. So then 4,000, and that is the entrance exam, which means that if you were not successful in the attempt, it's not like your money is coming back, right? So these are the fundamental, and for example, CLAT consortium, our NLUs do not have a policy yet on transgender persons, which means that many NLUs, I'm not certain NLUs have, one or two NLUs have it, and I'm deeply appreciative of that. Now, why do you think that policy is required? I know personally for a fact that a couple of transgender persons through networks of the community approached me saying, we want admission in an NLU. And they just passed out of 12th. And their school documents don't reflect their gender change. So there is incongruency in documents. There is school documents which insist a gender which is different from what they are insisting their gender is right now. And they are able to change, they managed to change their Aadhaar card. But they were not able to go and when they called the helplines were clueless. So then they were like, what do we do? So in fact, to be very honest, many of them thought we'll not go to an NLU. We'll just go to some other state university or college, because that is at least more accepting, and we would end up there. Many, I know for a fact that Ved Kumari ma'am, who is currently the Vice Chancellor of National Law University Odisha, who was the former Dean of Law Faculty in DU, told me this, that before I got an admission, 3 students in the category of transgender or third gender, etc., or others, applied to Delhi University, but refused to take admission even after they cleared the entrance, because there is no grievance redressal mechanism for transgender persons. And it is not published on the website, it is not published on the campus. So for example, in law schools and in legal profession, we make this a big, I'm sorry, I'm being very honest here and very critical here. A lot of people, place a very heavy reliance on, we should respect our seniors, right? And we should have so much, deference to our seniors. I was called, so I joined in the first year. I understood at least my batchmates calling me stuff, but I was called Randi, I was called Hijra, so many things. When I organized the Pride event, first Pride event in Delhi University, right outside, I was told, oh, aaj ye Randi log bhi aane lage kya? That was just my batchmates, I could understand. But the next year, the younger lot, they called me Randi as well, and Hijra as well. They said, they asked me for sexual favors. And whenever I went and sat in the canteen, people got up and did not want to sit beside me. And you're talking about 2,400 students is the amount of students that is admitted in Delhi University in one batch. Many may leave, etc. But you look at the number and you assume that so many people are actually going into the legal profession, and we have allotted so much time for moot court training and sensitization in our orientations, but not even 10 minutes to suggest that UGC guidelines prohibit this, right? Even the answers that I got was, oh my god, these are adults, they will already know. But public universities, including NLUs, which are public universities, admit students from a diverse background of people. How are you so assuming that every college or every school before that has given that sensitization to the students and they will follow through? Which is what is missing in NLUs and in law schools across the country. We need an equal opportunity policy. We need unisex washrooms. We need gender neutral hostels.
You might think, what is the big deal with washrooms? I was giving a sensitization training for nurses in a hospital. And in the washroom, it was a medical college, of course. So the students, I had used the female washroom and I was in a sari. It was probably an exam or something. So they were trying to discuss something in the washroom. And they realized that someone else is using the private behind the door. And they kept shouting, who is this? And my voice gives it away that I am not quote unquote a cisgender woman or female, if you understand it traditionally that way. I could not speak. For 15 minutes, I was in anxiety that what am I going to do? So if there had been just one, so in your homes, your mother and father don't use different washrooms. Your sister and brother don't use different washrooms. So what is the harm in creating just one more washroom, which is usable by one person, or at least if you don't have the space and the infrastructure, to designate a person with disability washroom as also a washroom accessible for transgender persons? Just one more signage. You just have to place one more signage and say that this is for transgender persons. It would make so much difference to someone coming there. And now okay, so I think I might have exceeded my time, but I just want to quickly point out, in terms of statistics, people keep saying that we are 4,87,000 persons, transgender persons in India. I'm sorry to say that is a 2011 census figure. It was even prior to the 2014 judgment. And the census the census organizers, they collected the data under others category. And it was part of the male category that they collected it. And we had to fight for that to be desegregated and said we are others. So which means that it is not even an accurate figure of how many transgender persons are there in the country. So I will probably quickly go through some other things. So Ministry of, just to impress upon you the situation. So Ministry of Ramesh Pokhriyal Nishank, the former Union Minister for Education, or HRD, in 2019 on the floor of Parliament said only 814 students who have opted to be admitted in IGNU under the category of transgender or others or third gender. No transgender students teaching or non-teaching staff are there in any central universities. Back then, there were about 41 plus central universities, and currently, as per UGC figures, there are about 54 plus central universities. Which means that, of course, there's a statistical trap here, right? For example, my document is male. Of course, I won't be counted as transgender. Where someone's document is female, they won't be counted as transgender. That statistical trap is always there. But look at for example, All India Survey for Higher Education, for example, 2019-20 did not even mention the word transgender. So according to so many data and statistics, transgender persons don't exist in universities. So what we need is scholarships, academic support, fee and mark concessions. When there can be mark concessions on many other grounds in entrance examinations, why can't there be mark concessions for transgender persons? I mean, I don't understand this. Are we expected to be, having all the resources that everyone else has, and then will be considered meritorious to enter a university? The fee and mark concessions, scholarships. We need policies in every university, not just in LUs, but yes, in NLUs. NLU consortiums and professional associations should also have policies. And there should be some amount of guidelines. So UGC guidelines should be implemented as far as POSH is concerned. And please understand, so there was this conversation I had with placement cell in my university. And they said, no, we can't discriminate between employers or trans inclusive, etc. I said, so I'll give you an example. I had to intern under an advocate, a very senior advocate. I don't want to name here. In their office, one of the juniors said, I have to cut my hair to intern there. I do not even have this much longer hair back then. I was growing it out. They said, if you are there, clients will not come. Clients will be not okay with you.
there'll be so many objections. So this transphobia pervades in employer situation as well. Even in moot courts, when I presented in a moot court I was speaking on economically weaker section reservation. Ironically, I won the moot court, but the judges literally laughed at me, saying, "Why are you dressed up in a sari when you're male?" And these were practicing advocates of High Court of Delhi who had come to judge the competition. So unless you have a policy, how will you decide what to do here? So, and please understand that transgender persons are not going to come to universities in the most perfect manner. Like, I have not transitioned, and transition costs immensely. I don't think any university is willing to spare out 2-3 lakhs to sponsor my transition, right? It's my personal decision. So then transgender persons might come to universities at different stages of transition. They might have transitioned, they might not have transitioned, they might be undergoing transition. So their documents might be incongruent. So you'll have to evolve procedures to make sure that you're at least sensitive about it. It's not enough to say we are not transphobic and we don't discriminate against transgender persons unless we have a policy. And last but not the least, I just want to mention this, and I'm sorry for taking more time. This I frankly am an advocate for, or at least I'm an advocate for horizontal reservations. I'm very clear about it. Currently, the Nalsa judgment, for example, said that all kinds of reservations should be extended to transgender persons. And you'd be surprised to know that already Tirchi Shiva's private member bill, for example, which did not pass, which was the precursor to the current law, said that 2% seats in all educational institutions, public employment, and even private sector should be reserved for transgender persons. But of course, it did not pass. Current law does not have any space for it. But in Madras High Court, there have been a couple of decisions. Karnataka government's order, which came on the insistence of Karnataka High Court, which said now transgender persons will be as part of employment and in civil services. And Rajasthan High Court has also ordered to the Rajasthan government to give reservations to transgender persons. Calcutta High Court has observed that reservations should be extended. Kerala High Court has also asked the central government, what policy have you evolved? And currently there is a petition in Delhi High Court, in fact, for extending reservations. Now you might think, what is the big deal with reservations? We will get in, transgender persons will get in on their own. Why should we extend reservations, right? I'll give you an example. Karnataka government order has said now that we'll reserve certain amount of posts in teacher appointments as well, not just in police, which means 1 in 150, if I'm not wrong, teachers, 150 teachers, in under the current order, in schools will be transgender persons. Do you see the extent of impact that will have? That Karnataka government schools will have transgender persons as teachers, because we're waiting for transgender persons to fight it out like hell and survive, and we have one of the worst mortality rates in the world as a community. Transgender persons many times do not survive until 60. Very, very few transgender persons survive until 60, which means that, so for example, some of your children, if you are going to Karnataka in the future, if you go to a parent teachers meeting, you might have a chance of actually encountering a transgender teacher counseling you with your child. That's the impact, which is why I advocate for reservations. It is not a perfect solution. It won't solve everything, but we have equal right to the public resources of this country. I will end with just last two things. If some of you are here and you might agree or disagree with whatever I've said here, please go and read a book called A Life in Trans Activism by A. Revati. It is one of the only books in India which has narratives by trans men as well. It's not just A. Revati Amma, who was a person in the Hijra community, etc. It was not just her story. It is in the words of the trans men as well. And
it has been added as part of curriculums in about 130 spaces. And A. Revatima has now been added as one of the few the only trans person to look at in this century in literature in Columbia University. That's a big achievement for a trans person. And there is one more called I Am Vidya by Living Smile Vidya. I'll post this in the chat. Thank you so much. Thank you so much for giving this time, and sorry for if I've offended anyone. Thank you, Kanmani, for so comprehensively expressing the ground realities of the transgender community. We have a much better image of the actual scenario now, and we hope to bring about a positive change in the same. Also, since Kanmani just mentioned about gender neutral washrooms, I would like to take a moment to thank the RGNUL Legal Aid Clinic of our college, who recently took the initiative of starting gender neutral washrooms on our university campus. The RGNUL Pro Bono Club is extremely grateful to the Legal Aid Clinic for their constant support and encouragement. Now, having said this, I would like to invite our final speaker for the colloquium, Mr. Maninderjeet Singh, a student and part-time teacher who believes everybody has the right to live, to feel accepted, no matter what their gender or sexual orientation is. Reading literature and watching films define his interests the best. Sir, I invite you to kindly address the colloquium. The virtual floor is yours. Hi everyone. So thank you so much to Abhinandan for inviting me over for this conversation. I'm glad in every respect. So I want to start by talking about how literature has and still is helping me to have an out-of-body experience. Being a trans woman in Punjab, I can understand it's hard. It's harder than it's harder than more than anyone can imagine. And I myself belong to a conservative family, a typical Jat Sikh family where uh, let's just not say being a trans is hard. In such families, even being an independent woman is out of the question. So ever since I realized that I'm different, I'm a trans woman, ever since I came to identify myself, so I took to reading. And I think every LGBT, like every queer folk, must read in their life because the experience, the out of body experience one feels through reading. Because I have living, I've always been I've living by one line, and that is remember you're not alone. So every trans person or every queer folk I meet on the street or in the market or in the city, I tell all of them that you need to know that you're not alone. There is somebody like you out there in the world, and you are a human being. You have equal rights. You are equally accepted as any other human being. So, talking about my own experience, I would say I always knew I'm different. I always knew I stand apart. So I take being a trans woman in my stride. I totally take it in my stride because I believe had I been a straight man or a straight woman, life would have been much more worse. So, and also the other thing in Punjab, so in Punjab, people don't really talk about queer people, but then I decided, see, I cannot expect others to talk about my community since it's my own community, and why not I take the lead myself? And I did. And I see things changing by the day. Uh, Even though the change is slow, but it is there. And I am quite hopeful. I mean, there are people like Dhananjay, Kanmani, and of course my friend Ghazal is there who doing great work to bring to bring queer folks forth in, be it in films, be it in colleges or universities or workplaces. Now, and talking about how reading has helped me again, the thing about reading is that when you start reading, you live in a different world. You are on your own. You don't have anybody to tell you, to anybody to look down upon you that sorry, you're a trans woman, you're not accepted, you don't have equal rights, you don't have anybody
to bully you, to mock you. I mean, I also went through these things, but I never let them affect me. I never let them rub it in. So, uh, also, I believe that visibility is very important. Once it is there, things begin to change. Things gradually begin to change. So, every workplace, I'm an English teacher myself. I teach English at a local institution in Patiala, and all of my colleagues accept me the way they accept others. And if you think you need to make being a trans woman, you need to make a place for yourself in the society. Yes, it is there, but then there are some things you need to make sure, like you must read, you must educate yourself, you must be aware of your about your rights, right? You should be you have to be uh, quite wise while making friends, because I believe people don't, especially straight people and don't really take much time to exploit queer folks. I mean, you go to any place in Patiala, you wouldn't feel accepted enough. But what can we do? How can we help it? At the end, I mean, I only believe you can accept yourself, and the day you accept yourself, or the mid time you accept yourself, I mean, the world is at your disposal. The world comes at your disposal. It's about accepting yourself. And I believe I accepted myself a long time back. And people often I'm asked that how when did I come out to parents? And I tell them, well, I never did, because I never had to, and I was never asked to. But anyway, who are they to come out to me, to ask me to come out to them? Why? Because I've accepted myself. I have, I've started living life on my terms, and that's what you want in life. I mean, I have my own set goals, right? I know for queer people, to be honest, I cannot say, I mean, I cannot ignore the fact that I am immensely privileged. I'm immensely privileged, like unlike other queer people. But yes, life has many more other things to offer other than, uh, being sad about being queer. So, I mean, what I suggest is, or what I believe is that start living your life your own terms. Just define yourself. Let nobody else define you. Like, when I look at myself, when I look at myself, I believe I'm just a human being. I don't go to people and tell that, hi, I'm an Inder, I'm studying and I'm queer. No, you don't really have to. So I believe, because visibility, once the visibility comes in, things get better, things change for better. And yes, of late I've been seeing much change in my own city, Patiala. I mean, people understand, and thanks to discussions like the one we are having right now, all these things help a lot. And one thing other queer people need to understand is that they don't have to be loud at all times. They don't have to be demanding. They don't have to be protesting. And because I believe there are other ways. I always wanted to be well educated or well learned, and I am. And I cannot tell you, being well learned or well educated, it comes with a promise. It comes with a promise of being accepted, of being yourself in the society, or with the promise of creating a place, or finding a place, or finding a foothold in the society. And living in Punjab as a queer person is quite hard, because of the toxic in atmosphere, and the air charged with masculinity, where men only get the upper hand. And when I believe it couldn't be great that we're talking about queer people from a university, based in Punjab, and that to a um,
small city like Patiala, I mean, I couldn't have asked for more. I couldn't have imagined more. So, and at the same time, yes, queer people also need to understand that being loud or protesting against or demanding their rights, yes, they must demand their rights, uh, and they should. And another thing here I want to point is that movies, yes, movies. Like in Punjabi, if you watch Punjabi film, you see trans people, like queer folks, are let down in ways unimaginable, in ways horrific. They're let down, they are mocked at, they are bullied, right? And sexist remarks are made, but nobody talks, nobody stands up for it, because that is required. That's what people want. That's what the audience seeks. So I see much change coming in the Bollywood film industry, and I hope things get better by and by. And another thing the another thing that I want to point out is makes people have this have this silly habit of mistaking a lesbian woman or a gay man. They mistake them for a hijra, right? And it happens to me also, like when I'm outside or I'm at a cafe. I've seen people coming up to me and saying, and sorry, please bless us with a baby boy, please bless us with a baby girl. And I tell them, no, I'm no God. I'm just a human being. You don't have to uh, elevate me to a high pedestal. No, I'm just a human being. And I believe when they stop looking at us like some sort of gods, that's where the real difference comes. Because if you look at the other person as some god or some goddess, right, you are othering the other individual. You're telling them, you're showing them that even though you are superior than us, you are a god, you're a goddess, but we are no equals. And what we as queer folks want is equality, just equality. We don't want to be regarded as gods or goddesses. No, not at all. And also, I mean, it's not entirely the fault of queer people, because things are hard in Patala. I have friends who couldn't even get beyond grade five, because of the constant bullying, mocking. Well, they could not do anything else other than dropping dropping out. So, and in the end, I would like to say that uh, RGNL Pro Bono Club, you guys must try to set up a library which is queer friendly, which is open to queer people, because that is going to make a lot of difference. Believe me, it definitely will. Because through books, trans people, they get to meet characters from across the board or from the world over, different characters, different colors, characters they are able to relate to or they are able to talk to, right? So that out of body experience becomes even more better when we have queer literature in public libraries. I don't think we have the library called Central Library in Patiala. It's of course a state-run library, and I don't think there is any uh, book written by a trans woman or any queer writer available there for the readers to read. I don't think so. I don't think so. So I believe